12th November 2025, Edexcel IAL Physics Unit number 1, and it is our third class on deformation chapter. And in this chapter, in your screen, I am starting a new topic that is called series parallel springs, and I am giving you a reference. We have studied series parallel resistor in IGCSE physics, in which these two resistors are connected in series. इसको 2 नंबर पे चला दो. And these two resistors are connected in parallel. In the same way, you can see, sir, these are two springs, and you are given this sentence: two identical springs. Identical spring means their stiffness is same. These two identical springs are connected in series. A force of 45 Newton is applied to the spring. Okay, this is a force 45 Newton is applied on the lower end. And remember, if the springs are connected in series, then this force, the same force for the spring number 1 and the same force for the spring number 2, because this force is acting not only for spring number 1 but it is also acting on spring number 2. So this is a force which is acting downward, and the same force we consider acting on the spring number 1 as well as spring number 2. And we are given the springs extend total, it is a total of 15 millimeter. Remember, if the total extension is 15 millimeter, then half extension in the first spring and half extension in the second spring, and when they are added, it will give you total extension. So the total extension is 15 millimeter. So the extension in the each spring will be half of total. Total extension 15, so it's half in the spring number 1 and the half in the spring number 2. And what is the question? The question is, what is the stiffness of each spring? Okay, not they are asking the total stiffness. No, no, they are asking what is the stiffness of each spring. So we have studied Hooke's law, F equal to K extension. The force is 45 Newton. K we have to calculate. Extension is 15 over 2, and the answer is required in millimeter. So we should not convert millimeter into meter. So remain into millimeter. And we are calculating K. So the value of K will be 45 multiplied to divided by 15. And what is the answer? Then I think the answer is option D. The answer is option D, in which 2 multiply 45 divided by 50. So in this question, you can see two springs are connected in series. When two springs are connected in series, then the applied force remains same for each spring. 45 Newton for the first spring, 45 Newton for the second spring. Same force will be acting on each spring. We are given total extension. Total extension is 15. So half in this spring, half in this spring. So force is 45, extension each spring 15 upon 2. So the value of K is answer D. And same question, same type of question we are solving more. So if you have noted, बेटा उसमें आप हमें बताइए, हम आगे जा सकते हैं अगर आपको ये बात समझ में आ गई है उसमें. ठीक है बेटा. And now another question. This is a question from October 2016. The question is, it is not a mathematical question. The question is, student repeated the investigation using two new springs connected in series. The key word is springs connected in series. The springs are identical. The springs are identical. Okay, and used in the original investigation. Explain why spring constant of this arrangement
spring constant of this arrangement would be half of one spring. So what is the meaning? The meaning is the spring constant of the first part, consider it is 4. Consider it is 4. The spring constant for the next part, consider it is also 4, because the springs are identical. And if I ask you what is the spring constant for the whole spring, for the whole spring, then the whole spring will be constant, will be 2. This is a question, because in the last class I taught you spring constant is not material constant, it is object constant. जस्ट लाइक कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग होता, ठीक है बेटा, अगर आपके पास एक स्प्रिंग होता, ठीक है जनाब, कंसीडर दिस इज सिंगल स्प्रिंग, कंसीडर दिस इज सिंगल स्प्रिंग, and consider its spring constant is 2. And if you cut this spring into two segments, then spring constant of each segment will be 4. ठीक है जनाब, मैंने उस बात को उल्टा बोल दिया. उल्टा क्या बोल दिया? क्वेश्चन में था टू स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग विद दिस, कंसीडर दिस इज वन स्प्रिंग and one spring constant is 2, and if it is cut into two equal pieces, then the stiffness constant of each spring will be 4. ठीक है जनाब, क्योंकि मैंने कल बताया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. ठीक है जनाब. अच्छा, इस क्वेश्चन पे वापस आ जाइए. फॉर दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच सेगमेंट इज सेम, and if you connect them in this way, consider now it is one spring, and now the spring constant or stiffness constant for the one spring will be half of one spring. So now I am going to explain कैसे. तो जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा. Consider the force F is acting on the two springs, and as I explained in the last question, this force will remain same for each spring. This force will remain same for each spring. Okay, so force F will be for spring number 1, force F will be spring number 1. Okay, consider total extension, consider total extension is x. If the total extension is x, तो बेटा उसमें आप मुझे बताएं स्प्रिंग नंबर 1 में कितनी एक्सटेंशन हो रही होगी और स्प्रिंग नंबर 2 में कितनी एक्सटेंशन हो रही होगी. एंड लास्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि जो टोटल एक्सटेंशन होती है वही आधी आधी हो जाती है. जी बेटा, उसमें टोटल एक्सटेंशन इज एक्स, देन व्हाट विल बी एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग? इट विल बी half in spring number 1, yes, and half in spring number 2. Okay, for the same force extension will be half in each spring. Okay, and if I ask you to calculate spring constant for this, so remember spring constant depend upon extension. I do not write symbol, I should write extension. So spring constant depends upon extension. Spring constant depends upon extension. Okay, so if extension is x upon 2, extension is x upon 2. Okay, so you can see spring constant is inversely proportional, stiffness constant is inversely proportional with the extension, inversely proportional with the extension. Okay, so if if extension is x upon 2, then the stiffness constant of the whole system will be double. Conversely, if I explain you by marking scheme, same force act through both spring. So what is the meaning? So total force is F, total force is F, and the same force will be acting in spring number 1 and spring number 2.
So it is sentence number one. Same force acts through both springs. Number one. Number two. Both springs have same extension. Same extension. And this same extension in this combination, the total extension in the total extension will be double, or force required for the same extension is halved. Okay, there will be double extension. There will be double extension. Double extension means total extension will be double extension. This is x upon 2. This is x upon 2. Oh, this is x upon 2. This is x upon 2. Total extension will be double of x upon 2. And if extension is double, then as I told you, sir, if extension is double, then spring constant will be half. Spring constant will be half. So note down the explanation again. Sir, when the two springs are connected in series, then one force which you are acting at the downward at the bottom of the two spring, same force will be acting through both springs. Same force. But this same force will produce same extension. Okay, because the spring are identical, same force will produce same extension. In this combination, the total extension will be double. Total extension. So total extension will be double. Okay. If total extension is double, then spring constant will be half. Spring constant will be half. Okay. I think I have explained, but I am going to ask this explanation by some student, और मैं चाहूंगा कि मनाहिल आप मुझे ये वाली बात समझाने की कोशिश करें। मनाहिल बेटा ज़रा दोबारा गौर से सुनिएगा। सर, इफ फोर्स F is acting downward, then same force will be acting on each spring. The same force will be acting in each spring. Okay. So this same force will produce same extension. Same extension is X, same extension is X. So total extension is 2x. And if total extension is 2x, x plus x, total extension is 2x. So sir, total stiffness constant will be half. Total arrangement spring would be half. Arrangement yani combined spring having constant half. When total extension is double, then stiffness constant will be half of this arrangement. जी बेटा मनाहिर कुछ बोलने की कोशिश कीजिए। I am asking you explain why spring constant of this arrangement will be half. Hmm. Yes. सही। बेहतरीन भैया बेहतरीन। उसमें बेटा एक दफा आप भी बोल सकती हैं। मनाइल ने तो इतना अच्छा सुना दिया मुझे। हाँ। हम्म। बेहतरीन भाई बेहतरीन। इसका मतलब है सबको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है, कि फोर्स लग रही है एफ, सेम फोर्स ईच स्प्रिंग में लग रही है, सेम एक्सटेंशन ईच स्प्रिंग में आ रहा है। तो टोटल एक्सटेंशन डबल, और अगर टोटल एक्सटेंशन डबल
So total stiffness half. Total means this arrangement. Total हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट टोटल इसका हाफ हो जाता है। ठीक है जी। बहुत अच्छा बेटा एक्सप्लेन किया आपने दोनों बच्चों ने। नीचे मार्किंग स्कीम में भी बेटा लगा हुआ है। एंड आई होप कि आफ्टर माई क्लास सिमरा एंड अब्दुल्ला विल राइट दिस आंसर एंड आई विल वेट आफ्टर माई क्लास। अच्छा और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हाँ बोले 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 बेटा सिमरा। ठीक है मैं देख देता हूँ। ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर थ्री भी बहुत मुश्किल है, इससे अगला भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, करना तो है। सुने क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए पहले तो जरा ये समझे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एनर्जी। अब्दुल्ला बेटा सिर्फ फॉर्मूला बता दे, मैं आपसे कोई मुश्किल बातें नहीं पूछने जा रहा। व्हाट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। अब्दुल्ला बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। हम्म। व्हाट इज द फॉर्मूला। हाँ हाँ बोले बोले। यार ये बता अब्दुल्ला, यार अगर फॉर्मूला भी नहीं आता होगा तो मैं क्या कर लूंगा यार। मेरी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार अब्दुल्ला भाई। अच्छा ठीक है। लेकिन बेटा चक्कर पता है कि अगर आपके फार्मूले के आखिरी में अगर आप बैठेंगे ना, आप अपने दिमाग के अंदर थिंकिंग प्रोसेस चला ही नहीं पाएंगे कि हमने करना है क्या। ठीक है। तो आप गलत सोच रहे हैं कि हमें फार्मूला मिला हुआ होगा तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। आप थिंकिंग प्रोसेस चला ही नहीं पाएंगे। थिंकिंग प्रोसेस चलाने के लिए आपके दिमाग में जो फार्मूले मौजूद होते हैं फिर आप एनालाइज कर रहे होते हैं। अच्छा चले यूं कर लेते हैं, अच्छा चला यूं कर लेते हैं। लेकिन अगर फार्मूला ही आपके दिमाग में नहीं होगा तो आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आपको फार्मूले याद करना चाहिए बेटा। ठीक है। अच्छा खैर लिखिए बेटा, एनर्जी का फार्मूला होता है, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ फोर्स एक्सटेंशन। हाफ फोर्स एक्सटेंशन। ठीक है जनाब, ये फॉर्मूला होता है। ठीक। अच्छा अब जरा क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन ये है कि इफ यू हैव वन स्प्रिंग, इफ यू हैव वन स्प्रिंग एंड इफ यू आर exerting टेंसाइल फोर्स F, ठीक है, देन इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी इज E। तो आई एम राइटिंग इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी एज E। ओके, द फोर्स इज F एंड इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी इज E। सही है जनाब। ये जब है जब आप अप्लाई कर रहे हैं सिंगल फोर्स, सॉरी सिंगल स्प्रिंग के ऊपर फोर्स। ठीक है जी। बट नाउ इन दिस arrangement P, springs are connected in series, and if springs are connected in series, you are exerting force F. Do not consider this is 2F, okay? This is considered as single force F. The force is F and this force is acting on two series spring. तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सीखा है कि when springs are connected in series, then same force acting in each spring. This F for spring number 1 and the same force F for the spring number 2. Okay, and you know this this force will produce extension delta x in first spring and delta x in the second spring because the springs are identical spring, so same force will produce same extension. So what will be total extension in series? Sir, total extension will be delta x plus delta x. It will be 2 delta x. And if extension is 2 delta x, then spring P new energy will be half is constant, force is constant. Sir, extension is 2 delta x. Extension is 2 delta x. You should not cancel out this 2. Sir, why? I am explaining. I am explaining. This 2 is a new number
This 2 is a new number, and this half force delta x is the equation of original energy. You cannot cancel out this 2. You cannot cancel out this 2. Why? Because this 1 upon 2 with F and delta x, this is equation of old energy. Old energy means when there is single spring and force F producing delta x extension. So this 2 remain as it is. This 2 remain as it is. And in this bracket is replaced by E. So new energy will be 2E. This dash represents new energy. So new energy will be 2E in spring P. I am repeating again. अब्दुल्ला आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनना बेटा अब्दुल्ला, मैं आपसे एक्सप्लेनेशन लूंगा. सर जब सिंगल स्प्रिंग था तो फोर्स एफ थी, एक्सटेंशन डेल्टा एक्स था. व्हेन स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, डेल्टा एक्स extension in one spring, delta x in other spring. So sir, total extension is 2x. If extension is double, so new energy will be double. Extension is double, so new energy is double. अब्दुल्ला बेटा कुछ बोलने की कोशिश करो. When springs are connected in series, so total extension is double, so energy is double. अब्दुल्ला बेटा बोलिए. हम्म. हम्म. Okay. When there is a single spring, energy is equals to half F delta X. When there is a single spring, energy is half F delta X. Sir, when two springs are connected in series, sir, extension will be double. Due to double extension, the energy will be double. अच्छा जी, energy will be double in spring P. Okay, energy will be double in spring P. In spring P, energy will be 2E. Energy will be 2E. It is about series. Okay, but I have not taught you any question about parallel. Okay, I have not taught you any question about parallel. So this is our first question on parallel. This is our first question on parallel. Sir, in parallel, when springs are connected in parallel, then this force is divided in the two springs. So for each spring, force will not be F. Sir, it will be F upon 2. It will be F upon 2. Just like I'm giving you an example, consider this is a block, and it is very difficult to lift. For example, Abdullah is trying to lift this block, but he is fail. He is not able to lift this block because this block is very heavier. And consider its weight is 500 Newton. Very difficult to lift. So now if Abdullah friend comes and he also exert another force, and now Abdullah and his friend is lifting this load, then this load is divided in their hands half half. Half load for Abdullah and half load for his friend. And now it is easy to lift this load by two persons. Okay? अब्दुल्ला बात समझ में आ रही है? आप अकेले नहीं उठा पा रहे थे. आप अकेले उठाने में 500 नहीं उठा पा रहे थे. आपने अपने दोस्त को बुला लिया, आराम से उठा लोगे. क्यों उठा लोगे? क्योंकि दिस लोड इज डिवाइडेड इन टू फ्रेंड्स. So when springs are connected in parallel, then this load is divided by 2. अगर दो स्प्रिंग है सर, अगर तीन होंगे तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा. जितने स्प्रिंग होते हैं, जितने वायर होते हैं, फोर्स इज डिवाइडेड among them. So in this question, so there are two springs.
If there are two springs, so this force is half for first spring, half for second spring. And now the same force will produce same extension. It will be x upon 2. It will be x upon 2. Okay, but same force. It is not same force, sir. It is not same force. Force is halved. Sir, force is halved. Extension is x upon 2, x upon 2. Extension is x upon 2, x upon 2. Okay. And now if I ask you, sir, this is the equation of energy in which half force delta H. And remember, half is constant, force is constant. Force is constant. We are calculating new energy. So you know half is constant, force is constant. We will write only new extension. New energy, new energy, new extension. Sir, what is new extension? Sir, new extension is x upon 2 in each spring. And remember, if each extension is x upon 2, then total extension will also be x upon 2. They are not added. In series, extensions were added. In parallel, they are not added. क्यों? तो भाई अगर एक स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, दूसरा स्प्रिंग भी 1 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, तो दे आर extending same in both springs, and if they are extending same, so total extension will also be same. They are not added. In parallel connection, extensions are not added. In parallel connection, extensions are not added. So total extension will also be simply f upon 2. And now, right now we are talking about total. Okay, it is total energy. It is total energy. We are working on total energy. So total energy will be half f x upon 2. अब्दुल्ला, क्या इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ? क्या ये दोनों 2 आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? Can I multiply these 2's or not? Sir, actually the original formula is half f delta x. So this 1 upon 2 can neither be multiplied or divided by any number. Okay. So this 1 upon 2 with f is a constant, force is constant, extension is constant. And this new 2, I have written out of the bracket. It, it means this new energy equals to half of old energy, and old energy is E. So for the circuit, sorry, for the connection Q, the energy will be half of E. Half of E. So the right answer is D. So the right answer is D. हाँ, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनना. सर, when springs are connected in series, then applied force F remains same for each spring. When springs are connected in parallel, then applied force is divided by number of springs. If there are two springs, then force will be F upon 2, F upon 2. Okay. In series, each extension is added. So total extension is 2 delta x. Sir, in parallel, each extension is x upon 2, x upon 2. Sir, they are not added. They are not added. So the original energy equation is half f delta x. But if you are calculating new energy for this parallel circuit or parallel combination, sir, new energy is E dash. Sir, we are working for total energy. So sir, the total force remain F,
Total force remain F. It is not for single spring. Total force is F and total extension is delta x upon 2. Delta x upon 2. In this equation, half F and delta x is the old energy. This is the old energy. Old energy is E. And this 2 is a new number. And this 2 is denominator. So the total energy will be 1 upon 2. Total energy will be 1 upon 2. So connection, in parallel connection, total energy will be half of E. Okay. And now I am explaining more. I am explaining more. This is a very difficult question. This is a very difficult question. In this question, parallel springs, and there are three parallel springs. It is not a two. It is three parallel. And if it is three parallel springs, then I am going to ask you what will happen. Read the question first. When a certain spring is stretched by tensile force F. This is for a single force spring, single spring. Single force F and single elastic strain energy is E. So this is the original equation. E is equal to half force extension. This is the original equation. This is the original equation. And now these springs are arranged in parallel. The sentence is parallel. And now not only they are connected in parallel, but also tensile force is 2F. टेंसाइल फोर्स इज 2F. बेटा उसमें हम आपसे बात कर सकते हैं? बेटा उसमें मुझे ये बताओ, ये जो 2F फोर्स है, ये ईच स्प्रिंग पे 2F लगेगी या डिवाइड हो जाएगी? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, डिवाइड हो जाएगी. तो मुझे बताओ ईच स्प्रिंग पर फोर्स कितनी आएगी? ईच स्प्रिंग पे बेटा कितनी फोर्स आएगी? बोले बोले, सही बोल रही हैं आप? बिल्कुल सही आप बोल रही हैं सर. इट विल बी 2/3F, 2/3F and 2/3F. Same force will be, same force will be, and it is divided by 3. Okay, so it is 2/3 for each spring. Okay. अच्छा बेटा ये बताइए, एक स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा बाय 2/3 F फोर्स? उसमें बेटा बताएं कितना एक्सटेंशन होगा? Force is directly proportional with extension. When the force is F, extension was delta X. जी, if the force is 2/3F, बेटा कितना होगा extension? Yes, 2/3 delta X. You are right. This is the extension for each spring. Okay, this is extension for each spring. But Asma, what will be total extension? यहाँ पे आपने गलती कर दी. जितना एक स्प्रिंग में एक्सटेंशन होता है, टोटल एक्सटेंशन भी उतना ही होता है. ठीक है, मेरे ख्याल में मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको ये वाली बात, तो फिर आपको समझ में आए बोलना क्या चाह रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, this is spring. I am not drawing spring. This is spring. It is 1 2 3 4 5, sorry, 1 2 3 4, 4 centimeter long. Okay, the length of the spring is 4 centimeter. This is another spring 4 centimeter long. This is another spring 4 centimeter long. Okay, consider I am hanging a load, and when I hang load, its length increases 1 centimeter, increases 1 centimeter, increases 1 centimeter. Then what is total extension? Usma beta, what is total extension? 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter. Extension in each spring is 1 centimeter. Then what is total extension? So total extension will remain 1 centimeter because this load will move down by 1 centimeter only. Although each spring is stretching 1 centimeter, but the total extension will remain 1 centimeter.
and otherwise I am showing you in series. This is spring number 1. Consider 1 centimeter stretch. This is spring number 2, 1 centimeter stretch. This is spring number 3, 1 centimeter stretch. You can see each extension will be added to find out total extension. So in series, total extension is calculated by addition. In parallel, sir, total extension is equal to single extension. Total extension is equal to सिंगल एक्सटेंशन. जब स्प्रिंग सीरीज में लगे हुए होते हैं तो सीरीज में सर जितना एक्सटेंशन होता है ना, सारे एक्सटेंशन ऐड होते हैं. इन पैरेलल जितना एक स्प्रिंग का एक्सटेंशन होता है ना, उतना ही टोटल एक्सटेंशन होता है. तो आई थिंक यू शुड राइट दिस रूल. नोट डाउन द रूल बेटा. इन सीरीज अरेंजमेंट, in series arrangement, total extension is the sum of all extensions. In parallel, in parallel, total extension is the extension of single spring, single extension. जब आप सीरीज में लगाते हो तो सर सीरीज में ना सारे एक्सटेंशन आपस में ऐड करना पड़ जाते हैं. सारे एक्सटेंशन सर आपस में ऐड करना पड़ जाते हैं सीरीज में. ठीक है सर. सीरीज में सर सारे एक्सटेंशन हमें ऐड करना पड़ेंगे सीरीज में. So in series, total extension is the sum of all extension. जबकि in parallel, total extension is the extension of single extension. जो single spring में extension हो रही होगी, it will be the total extension. Total extension में सर कोई प्लस माइनस नहीं करते. क्या अब आपको ये वाली बात बेटा मेरी समझ में आ गई? उसका अब बेटा उसका बताइए. सीरीज में सबको ऐड कराते हैं, पैरेलल में सर ऐड वैड नहीं कराते. जो एक में आता है वही दोनों में कर देते हैं. ठीक है. अच्छा मैं क्वेश्चन में वापस आ रहा हूँ. तो बात ये हो रही थी सुबह से कि बेटा टोटल फोर्स थी 2F. फॉर ईच स्प्रिंग इट इज 2/3F. ईच स्प्रिंग एक्सटेंशन 2/3 डेल्टा एक्स. ठीक है. इट इज ईच स्प्रिंग एंड द टोटल एक्सटेंशन विल ऑल्सो बी 2/3 डेल्टा एक्स. ठीक है जी. अच्छा अब आपसे अगर मैं पूछूं कि व्हाट विल बी टोटल एनर्जी, व्हाट विल बी टोटल एनर्जी. ठीक है जनाब. और टोटल एनर्जी किसकी चाहिए? इलास्टिक एनर्जी चाहिए पूरे सिस्टम की. इट इज नॉट फॉर अ सिंगल स्प्रिंग. दे आर आस्किंग टोटल इलास्टिक एनर्जी फॉर द होल सिस्टम. तो बताइएगा होल सिस्टम की आपको एनर्जी चाहिए तो हाफ फॉर्मूले का. बताइएगा पूरे सिस्टम की फोर्स कितनी है? पूरे सिस्टम की. इट इज नॉट फोर्स ऑफ सिंगल स्प्रिंग. दे आर आस्किंग पूरे सिस्टम की इलास्टिक एनर्जी. सर टोटल फोर्स इज 2F. टोटल फोर्स इज 2F. एंड व्हाट इज टोटल एक्सटेंशन? टोटल एक्सटेंशन इज 2/3 डेल्टा एक्स. टोटल एक्सटेंशन इज 2/3 डेल्टा एक्स. ओके. यार अब्दुल्ला इस वाले 2 को इस वाले 2 से काट सकता हूँ? जल्दी से बताओ. कैन आई कैंसिल आउट दिस 2 विद दिस 2? नो. नो. हाँ. दिस 1/2, this f and this delta x. So you cannot cancel out. So this f half f delta x. So this is formula. So we cannot cancel out. But you can multiply this 2 to the 4/3. This is 2 to the 4/3.
So the new energy is equal to 4 upon 3, and this is old energy. Old energy is E. So the answer is C. So the answer is C. तो जब स्प्रिंग्स को पैरेलल लगाते हैं तो पैरेलल लगाने में सर जो फोर्स टोटल होती है, सर ये फोर्स स्प्रिंग्स में डिवाइड हो जाती है। सर स्प्रिंग में डिवाइड होगी तो ये बन जाएगा 2F/3। सर जितनी फोर्स होगी उसी फोर्स के कॉरिस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन होगा 2/3 डेल्टा। और सर टोटल एक्सटेंशन भी यही होगा क्योंकि पैरेलल में टोटल एक्सटेंशन यही होता है। ठीक है ना। सर टोटल एक्सटेंशन यही है, तो टोटल एक्सटेंशन ये रहा, टोटल फोर्स ये रही, टोटल फोर्स ये रही, टोटल एक्सटेंशन ये रहा। ठीक है जी। 2 to the 4/3। बाकी हमने फार्मूला बना लिया और इसी से 4/3 से हमारी आ गई टोटल न्यू एनर्जी। टोटल न्यू एनर्जी। इट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड 8 का आंसर इज सी। 8 का आंसर इज सी। ठीक है जनाब, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। या अल्लाह। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बट दिस इज नॉट फ्रॉम एडेक्सल। ठीक है, एडेक्सल का नहीं है। ठीक। और मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ, मैं देखूँ आपको करना आ रहा है या मैं अकेले अकेले करा रहा हूँ। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ बेटा।